Hello everyone, welcome to Unacademy Studios Race, which is the largest channel for UPSC preparation. And my name is Vijay Kumar, who is going to teach on Unacademy Studios Race as well as on Unacademy Plus platform. So पहले Unacademy Studios Race के बारे में बता देता हूँ. This is the largest UPSC channel on the YouTube, where please do click on the subscribe button so that you will be getting the continuous notification. And here these are the educators who deal some of the awesome areas of UPSC on this particular Unacademy Studios Race. So starting up with Jatin Gupta sir, who deals some of the awesome courses like yearly round current affairs plus 1000 MCQs on polity, and Siddharth Arora sir, he deals with 100 lecture series of covering Lakshmikant, and myself daily 6 p.m. live I'll be dealing up with learning geography through MCQs, and 9 p.m. live I'll be covering up with learning history through MCQs, and Pratik sir, he covers a daily press information bureau analysis, the things whichever might be covered in PIB, so we'll be covering that along with the NCERT history program. So Amit sir, he will be dealing up with NCERT history program, and Saurabh sir daily he comes up with Hindu newspaper summary analysis along with MCQs on the basis of current affairs. So these are the educators on Studios Race. Along with here on Studios Race, they will be teaching on Unacademy Plus platform. So on Unacademy Plus platform, you have 80 plus topmost educators who have created some of the awesome courses on Unacademy Plus. So all throughout the India, all the faculty, all the awesome educators have been covered up, and these educators will be covering up all the syllabus which is required for UPSC CSE 2020 especially. So please come and subscribe to Unacademy Plus platform as well. So usko subscribe kaise karenge? Just open your Play Store and उसमें Unacademy Learning App click करिए, उस पर install button दबाइए. After you click on the install button, you will be redirected, and hence click on the plus button. उसमें आपको UPSC CSE choose करना है, and then you will be redirected towards the payment button, which is very nominal. Payment जो भी है, यह दूसरा इंस्टीट्यूट से आप अगर कंपेयर करें 100%, ये पेमेंट बहुत it is very low. मैं दिखा देता हूँ. Like first let me introduce my course which I have started daily 6 p.m. live वाला course जो भी है, this is Mastering Geography Through MCQs. Clear? So this is entirely 100 lecture series, and ये 100 lecture series में I'll try to cover all the questions which would come expected questions in 2020 UPSC CSE, ताकि आपका भला हो जाए ज्योग्राफी में. एंड इससे अलावा 9 PM लाइव आता हूँ, उसमें मास्टरिंग हिस्ट्री थ्रू MCQs के बारे में डिस्कस करता हूँ. ठीक है? तो if you want to know about me, I have did my civil engineering from JNTU Hyderabad, and I also have my masters in geography, and I have 5 years of immense teaching experience in this particular field of UPSC CSE. So because of passion towards teaching, I am standing in front of you. Clear? So let me introduce some of the awesome faculty on Plus platform. Like if you see Deepika ma'am, like Aarti ma'am, and आप देख सकते हो like Anuj sir, Rizwan sir, Jatin sir, Saurabh sir, Aarti Chauri ma'am. All these have covered some of the awesome areas of UPSC, and आप 100% ये लेक्चर से आप बेनिफिट होंगे. अगर आप पुराना लेक्चर्स को मिस हो गया तो भी आप रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख सकते हो. You can 100% watch the recording lectures. Clear? So done. So I'll be sharing, like I have done a course on Plus platform, that is complete course on climatology, and now I am covering complete course on geomorphology. Clear? So 100% you will be getting the benefit from these courses. छोटा छोटा parts में divide करके geography syllabus को I have explained it in a detailed manner. So 100% आप benefit ले सकते हो इसमें से. Please do subscribe now. Please do subscribe to Unacademy Plus platform. Don't waste your time. आपका 100% you will crack civil services just by sitting at your home, by getting onto Plus and covering the Studios Race lectures as well. So see, these are the payments which you should bear to see the lectures which are present on Unacademy Plus platform. And अगर आप देखें एक महीने के लिए सिर्फ 8,000 रुपए, which is very very nominal. आप इतने सारे lectures देख सकते हो. Daily more than 30 plus live hours happen on Unacademy Plus platform. उसको आप enjoy कर सकते हो.
जस्ट बाय पेइंग 8,000 रुपीज पर मंथ। क्लियर? अगर आपको ये मंथ हर एक महीने 8,000 रुपए पे करना मुश्किल हो रहा है तो आप क्या करिए, लाइक टेक द कोर्स, लाइक 12 मंथ का जो भी पूरा कोर्स है वो कोर्स ले लीजिए एंड उसमें जो भी 12 मंथ्स को 40,000 रुपीज लगेंगे, ये बहुत नॉमिनल है पर ईयर इफ यू सी 40,000 रुपीज जस्ट 40,000 रुपीज वुड बी प्रेजेंट, लाइक आप 40,000 भर के एक साल हमारे साथ तैयारी करिए, 100% आप सिविल सर्विसेज क्रैक करेंगे। अगर आपको 2 साल लेना है तो 2 साल भी ले सकते हो, लाइक इमीडिएटली एज ऑफ नाउ राइट अवे इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो, आई सजेस्ट एस्पिरेंट्स टू गो विथ 24 मंथ कोर्स। एंड जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो you can use any of the options here and before going to payment आप ये विजय लाइव कोड यूज कर सकते हो। So by using Vijay live code, if you click on the apply button, ये 40,000 जो भी है that will be converted and you will be getting this price for 36,000। जब आप ये कोड यूज करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। So you will be getting 10% discount by using this code. Like this can be applicable on 2 years as well। 64,000 जो भी है उसका change हो जाएगा and you will be getting it for 57,600। Clear? So don't waste your time, don't waste your money just by paying nominal amount। इस Unacademy Plus प्लेटफॉर्म में आप सब्सक्राइब करके आप सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हो। ठीक है? सो जस्ट ओपन द प्ले स्टोर ऐप एंड इंस्टॉल, एंड जब भी इंस्टॉल करेंगे आपको ये बटन मिलेगा गेट द सब्सक्रिप्शन डन, एंड उसमें आपको जो भी पैकेज चाहिए वो पैकेज को चूज कर लीजिए। बट जनरली आई सजेस्ट एस्पिरेंट्स टू गो विथ 12 मंथ और 24 मंथ क्योंकि उसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर एक महीने को आप 8,000 रुपए पे कर रहे हैं तो लाइक 12 मंथ्स को दैट बिकम्स 96,000। क्लियर? तो उससे अच्छा एक ही बार आप पे कर लीजिए 40,000 में, आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एक साल का। ठीक है? तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड कॉल्ड एज विजय लाइव। आप ये विजय लाइव कोड यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 40,000 जो भी है उसमें ये कोड यूज करने के बाद 36,000 पे करना होता। तो 100% डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, use this opportunity, you will 100% crack civil services by using this plus platform। clear? तो let's move into our lecture। हर एक लेक्चर में 20 MCQs, clear? 20 MCQs लेके आता हूं आपके लिए। ये 20 MCQs में चाहे वो प्रीवियस ईयर से उठाऊं नहीं तो एक पर्टिकुलर कोर एरिया से उठाऊं, लाइक आई हैव स्टार्टेड दिस राइट अवे फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी, नाउ इट्स 55th लेक्चर। क्लियर? ऐसा 100 लेक्चर सीरीज में पूरा ज्योग्राफी की सिलेबस कवर करूंगा। apart from that previous year questions भी उठाऊंगा, and also I'll make sure that your map work which has to happen that will be inserted in this particular aspect as well। so आप क्या करिए, just keep atlas in front of you before watching this lecture, that will help you in this regard। clear? तो हर एक क्वेश्चन को मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा आपको। I'll wait for 30 seconds and वो 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ऑप्शन को पिकअप करना है एंड कमेंट बॉक्स में डालना है। आप अपने खुद चेक कर लीजिए, अगर 20 क्वेश्चन में 15 से ज्यादा सही हो रहा है तो यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। अगर उससे भी कम हो रहा है तो यू हैव टू वर्क मोर हार्ड फॉर दिस। क्लियर? तो ट्राई टू लाइक सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद इन 30 सेकेंड्स ताकि आपका प्रैक्टिस बन जाए पूरा। ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स राइट नाउ। योर 30 सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 10 सेकेंड। क्लियर? So question is like, which of these will have a bearing on increasing the pulse production in India?
तो इंडिया में ऑलरेडी पल्स क्राइसिस आया था, उसके ऊपर बहुत सारे कमिटीज बिठाया गया था. Later on, pulses production started increasing slowly because as most of the Indian societies like a vegetarian in nature, तो maximum food which we consume उसमें प्रोटीन ये पल्सेस से मिलेगा 100%. ये हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए काम आएगा एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो भी है, दिस पल्सेस विल बी हेल्पिंग अस. क्लियर? तो विच ऑफ दिस विल हैव अ बेरिंग ऑन इंक्रीज ऑफ पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया? देखते हैं. लाइक सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन. So you have to know what National Food Security Mission is. Clear? So when it was introduced, please go and check out when this National Food Security Mission got introduced. And उसमें pulses का है नहीं, ये देख लेते. This is 100% true. Option number 1 तो बिल्कुल सही है. Bringing green revolution to eastern areas. Clear? So now ईस्टर्न एरियाज जो भी हैं, द ईस्टर्न स्टेट्स जो भी है, दीज आर द प्रेजेंट जोन्स वेयर the green revolution in the contemporary phenomena, in the modern phenomena can be introduced. Earlier most of the northwestern and northern states had the implementation of green revolution, but now this eastern areas jo bhi hai, these are the most important grounds for implementation of this particular green revolution. Clear? So आप अगर यहाँ पे देखें तो increased intercropping of pulses with suitable crops, this is also true. Hence all of this becomes the perfect option for this question. Clear? तो आप अगर यहाँ पे देखते हो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फोकसेस ऑन, यहाँ पे मैं जस्ट 2-3 स्टेटमेंट बना के रखा हूं, बट इससे भी ज्यादा कवरेज यहाँ पे नहीं कर सकते. आप जाके नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में पढ़ लीजिए. क्लियर? सो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फोकसेस ऑन पल्सेस, cereals, millets and selected commercial crops. Not all the commercial crops, it is only selected commercial crops. Please go and watch what are those selected commercial crops. But a decision was taken to exclusively dedicate 50% allocations in the National Food Security Mission for the development of pulses alone. Clear? So 50% allocation in the National Food Security Mission has been given by this pulses alone. आप अगर यहाँ पे देखें, cultivation of pulses is being promoted as an intercrop with cereals, oilseeds and cash crops with introduction of suitable varieties and package of practices. Clear? So pulses के बारे में 100% आपको जानना जरूरी है. ये question like wantedly I have put over here. Why? Because before the Kharif season, then so there was like an issue which was related, like जो भी elections हुए थे उससे पहले जो मार्च एंड अप्रैल का मंथ था, तो उसके ऊपर like Kharif crop and Rabi crop होगा obviously pulses. There was a huge impact, like editorials में बहुत ज्यादा कवर कर चुके हैं already pulses के बारे में. आगे भी जाके you would be experiencing huge amount of contemporary issues which would be covered by pulses. So hence pulses पे आप focus करिए. Don't miss whenever you get in any of the newspapers. Clear? Next, second question. Clear? So this is the second question. Last 5 seconds. Last 5 seconds. Clear? So now, which of these crops are generally grown together in mixed cropping? Sorghum, bajra, coffee in rain-fed conditions to reduce crop failures. This is true. Wheat and mustard. Do remember this. Already this question has been asked in UPSC. सिविल्स में नहीं पूछे थे, बट CAPF एग्जाम जो भी होता है उसमें पूछ रखा है ऑलरेडी. तो wheat and mustard for better utilization of the soil nutrients. Both the statements which have been given, they're absolutely true. Both 1 and 2 becomes the perfect option for this question. आप अगर यहाँ पे explanation देखें, the cereals are usually mixed with leguminous crops जो भी होते, ज्वार और बाजरा mixed with तूर, उड़द, मूंग and मटकी और कुल्थी. Wheat is mixed with peas, gram और mustard. कॉटन इज ग्रोन मिक्स्ड विद तूर और सनफ्लावर. तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग का जो भी इंपॉर्टेंस होता है,
दिस मिक्स्ड क्रॉपिंग्स आर इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज, फॉर एग्जाम्पल अगर दो क्रॉप है, हर एक क्रॉप एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को यूज करेंगे वो सॉइल से, तो इन ए स्ट्रिप मैनर, इन ए लाइन मैनर, लाइक क्रॉप नंबर 1, क्रॉप नंबर 2, क्रॉप नंबर 1, क्रॉप नंबर 2, तो ऐसा मिक्स्ड क्रॉपिंग करने से बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल वुड हैपन. तो 100% दिस बिकम्स परफेक्ट ऑप्शन that both the statements which have been given, that is absolutely true. And अगर आपको याद रखना है, clear, so important crops जो भी हैं, like wheat is an important crop, rice is an important crop, jute is one of the important crops which is grown in India, spices, cotton, then sugarcane, so coffee, tea, like these kind of crops which are present, pulses. So इसका crops का growing areas आप याद रख लीजिए, clear. So Indian map में आप क्या करो, like एक A4 sheet लो, just make like in that A4 sheet एक India map draw करियो, and वो draw करने के बाद please mention areas of wheat, rice and cotton, ताकि आप जब भी उसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, yes this is one of the particular crop growing zone in that particular region. तो आप इसको याद रखना जरूरी है. ऐसा फैक्ट्स यूपीएससी में पूछे ना पूछे, बट एटलीस्ट मिनिमम कॉमन सेंस है, हमारे को याद रहना ही पड़ेगा. क्लियर. नेक्स्ट, थर्ड क्रॉप. Clear. So in this question he has given that consider the following statements about the plantation of rubber. So it is grown in tropical and subtropical areas. Clear. So जो भी tropical या subtropical areas में wherever we find huge amount of water, wherever we find huge amount of rainfall, वहाँ पे वो regions में grow होगा. This is absolutely true. It is grown in the northeastern regions of India as well as in South India. South India में जो भी केरला regions हो, ना तो bordering regions of केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु हो, in those regions we would be experiencing the growth of plantation of rubber. So India is one of the leading producers of rubber in the world. This is also true. But the largest leading producer is Malaysia and Indonesian regions, which are the leading producer of natural rubber. Despite natural rubber was invented in Brazil, but this natural rubber is not grown in Brazil because of the local conditions which prevail over there. Hence natural rubber will become highly important for you. इसका regions जो भी साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसको याद रखना जरूरी बनता है. लाइक ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस व्हिच हैव बीन गिवन, दे आर परफेक्टली ट्रू. क्लियर. सो दे आर परफेक्टली ट्रू, ऑल द अबव ऑप्शंस. क्लियर. सो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत फैक्ट्स देख सकते हो. इंडिया इज रैंक्ड 5th अमंग द नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड. पहला तो मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ये याद रख लीजिए प्लीज. डन. तो इट रिक्वायर्स अ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां पे ज्यादा बारिश होगा दैट रेनफॉल इज रिक्वायर्ड, लाइक मोर देन 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इज रिक्वायर्ड. एंड 25 डिग्री टेम्परेचर. जो भी ट्रॉपिकल रीजन्स में लाइक क्लाइमेटिक कंडीशंस होगा वहां पे टेम्परेचर ज्यादा मिलेंगे. एंड ऑल्सो वी वुड बी एक्सपीरियंसिंग like huge amount of rainfall. In those regions natural rubber would be grown. Through an equatorial crop, it is also cultivated in tropical and subtropical areas under special conditions. तो इंडिया में अगर आप देखें, do remember South Indian region as well as northeastern region, these are the high important growing zones of natural rubber. Clear? The next fourth question. तो इसमें like answer has been come out, like which of the following are rabi crops? ये तो आराम से बता सकते हो. क्लियर. सो व्हीट इज ए राबी क्रॉप,
gram is a rabi crop, pea is a like rabi crop, mustard. So all these are rabi crops. Clear? So just make a differentiation. Kharif crop क्या होता है? Kharif crop is that crop which grows along with rainfall season. इंडिया का जो भी रेनफॉल सीजन है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये हमारा खारिफ सीजन हो जाता है. दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन दैट रीजन इन दैट सीजन पर्टिकुलरली जून जुलाई अगस्त सितंबर में, उसको खारिफ क्रॉप्स बोलेंगे. अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में जो भी ग्रो होगा उसको राबी क्रॉप्स बोलते हैं. एंड फरवरी मार्च अप्रैल एंड मे एट मोस्ट, क्लियर, विल बी कॉल्ड एज ज़ैद क्रॉप्स. क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हो खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स. क्लियर? तो खारिफ क्रॉप हो गया लाइक कॉटन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट खारिफ क्रॉप, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, पैडी. एंड अगर राबी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को देखें लाइक ग्राम, पीस, mustard and wheat, these are important rabi crops which we have. Clear? So do remember, do differentiate the kharif crop and rabi crop. इस पे questions आए तो like they would be asking the questions in a match the following manner. They will be asking you like match these particular questions. इसको match कर दीजिए, इसको match कर दीजिए. Clear? So they would be asking the questions in this manner. So please try to focus on these particular aspects as well. Next, fifth question. So just a minute. Clear? Last 5 seconds. Done. Wheat, gram and paddy. Clear? Wheat and paddy combinedly पूछ रहा है. Wheat, gram and paddy can be grown in which kind of the soil? Generally इसका टेम्परेचर कंडीशंस एंड रेनफॉल रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग है. पैडी का अगर आप देखें, पैडी रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर बट व्हीट रिक्वायर्स वेरी नॉमिनल वाटर. Moderate temperatures are required for wheat, high temperatures are required for paddy. But अगर ये दो तीन like gram जो भी दिया है, these are grown in clay soil and loam soil. Clear? So both B and C जो भी ऑप्शन में दिया है, these are perfectly true. Clay and loam soils में ग्रो होगा, क्योंकि sandy soils में तो ग्रो नहीं होगा. Sandy loam soils में तो obviously clay and loam में होनी चाहिए. तो in both of these soils we would be having the growth of paddy, wheat as well as gram. अगर आप यहाँ पे देखें clay soil, this is soil sample in which clay fraction is more than 25% of the mixture. So characteristics अगर clay soil का आप देखें, it is reddish brown in color. Please do remember these points. ये points याद रखना जरूरी है. It has very fine and powdery particles when dried, and it has very low porosity and high water holding capacity, high weight holding capacity in the same style of black soil. It has many tiny pore spaces and it is poorly aerated. So these are the characteristics. आप अगर loamy soil को देखें, this is a soil sample that contains both clay and sand particles in moderate proportion with organic matter. तो characteristics अगर आप इसका देखें, particle sizes are moderate, ये darkish brown color में है. It has moderate water holding capacity and porosity. It is moderately aerated. It is rich in plant nutrients. And it is the best soil for agriculture. Do remember the characteristics of these both. ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन तो अब तक पूछे नहीं, but there are chances like consider the following statements related with clay soil, consider the following statements related with loamy soil, consider the following statements relation with clay and loamy soil. ऐसा क्वेश्चन 100% आने का चांसेस मिलेगा, तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे तरीके से याद रखना बनता है. ठीक है? तो नेक्स्ट सिक्स्थ वन.
Last 5 seconds. Clear? So generally pulses are grown in rotation with other crops. So जब भी pulses grow होंगे तो this is generally grown with rotation of other crops. Clear? So rotation of other crops, this is because generally pulses take less nutrients from the soil, so the next crop can utilize nutrients better from the soil. ये बिल्कुल like this is not the perfect option for this. Pulses are leguminous crops, this is true, and hence help in restoring the soil fertility. This is absolutely true. This is absolutely true option. Water requirement for the pulses is lower as compared to the other crops, and hence in conserving soil moisture for the next season of cropping, so pulses would be helping. जो भी pulses होंगे, this will take very less water when compared to the other crops. Hence ये दोनों option जो भी है, these are perfectly true. Hence B and C becomes the perfect choice of option for this particular question. तो आप इसका explanation देखें तो even with less moisture and in dry conditions, pulses will grow and survive. All these leguminous crops except ahar helps reduce soil fertility by fixing nitrogen from the air. Clear? So do remember this point as well. Hence these are mostly grown in rotation with other crops. That is the major important reason which we have for the growth of these particular crops which we have. Clear? So next question. Your time starts now. Last 10 seconds. Done. Consider the following statements about cultivation of wheat. So it is most important staple crop for the North Indians, and rice is most important staple crop for the South Indians. Do remember. It thrives best in the soils which do not drain water easily like loamy soil. No, wheat requires those soils which can drain the water very easily, like best alluvial soils can drain the water very easily. This is one of the most important aspects. Hence, this option is false. तो अभी इस ऑप्शन गलत मान लो, like this is 100% false. बिना दो ऑप्शन तीन ऑप्शन पढ़े मैं ऑप्शन को निकाल लिया, तो ऑप्शन इज 2 and 3. 100% ऑप्शन इज 2 and 3. क्लियर? सो विथ जस्ट लॉजिकल अप्रोच एक ऑप्शन को अगर हम एलिमिनेट कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन से, तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन को निकाल सकते हैं. चाहे आपको 2-3 ऑप्शन पता ना हो, बट एक ऑप्शन जितने ऑप्शंस में भी हैं उसको एलिमिनेट करके आप आराम से ऑप्शन को निकाल सकते हो. दिस इज वन ऑफ द लॉजिकल अप्रोचेस. यू विल गेट 10 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस बता रहा हूं. You will get 10 questions minimum, 100 से 10 questions ऐसे मिलेंगे जिसमें अगर आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं तो उसका ऑप्शन का आंसर मिल जाएगा. ठीक है? तो ऑब्वियसली वीट का अगर आप देखें, इट इज टेम्परेट रीजन क्रॉप. तो नॉर्थ इंडिया ऑब्वियसली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन बन जाएगा. ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप आराम से. It requires moderate rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. This is also true. So moderate rainfall, moderate temperatures and also bright sunshine during the time of harvest is required for the growth of this particular wheat. So wheat growing regions like mostly temperate regions मिलेगा. It thrives best in well drained loamy soil. It is grown in India, it is grown in winter season. But मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, टेम्परेट रीजन में जो भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स होंगे, लाइक चाहे वो प्रायरीज बेल्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो, पंपास बेल्ट ऑफ साउथ अमेरिका हो, वेल्ट्स रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका हो, नहीं तो डाउन्स रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो, नहीं तो इंडिया का नॉर्थर्न रीजन हो, टेम्परेट रीजन, एंड दिस स्टेपीज बेल्ट जो भी हो, इन दिस रीजन वी जनरली फाइंड the growth of wheat. We would be finding the growth of wheat in this particular region. Hence
we would experience huge amount of growth of wheat in the temperate region. Do remember, ये जो भी wheat है mostly in India it is grown in winter. ये winter season में ये crop grow होंगे, like you would be finding the growth of this particular crop in winter season. Do remember, ये temperate crop है, and these are the regions, please do remember, where the most of the wheat of the world is grown. And यहाँ पे जो भी prairies belt है वो temperate grassland जो भी है, they are highly nutritious. हेंस पूरा का पूरा जो भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स है उसको काट के वहां पे वीट ग्रो होना शुरू कर दिया. लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रक फार्मिंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट हैपेंस इन दिस रीजन. along with wheat, maize is grown in this region. Wheat human consumption के लिए, and maize it is used for fattening of cattle so that meat processing industries में help करे. So these regions which are present, which have circled the temperate grasslands, they are called as food baskets of the world. Clear? So most of the wheat comes from these particular areas. Next question. Your time starts now. Last 5 seconds. Done. Consider the following statements about cultivation of millets. It can be grown on less fertile and sandy soils. Clear? So millets mostly, these are the crops which can be grown in the dry areas, जहाँ पे सॉइल उतना फर्टाइल नहीं हो, जहाँ पे ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी नहीं हो, वो रीजन्स में व्हीट ग्रो हो सकता है. क्लियर? सो इट इज द रीजन वेयर मोस्ट मिलेट्स आर ग्रोन, लाइक less fertile and sandy soils. In these regions millets can be grown. This is absolutely true. It can be grown in the areas of low rainfall and high temperature. Already बता चुका हूँ. Like dry farming regions जो भी हो, semi arid regions बोलेंगे हम, like जहाँ पे भी बारिश बहुत कम हो, उन like in those regions, clear, millets can be grown. Like if I say the example, जो भी rain shadow region of western Ghats हैं इंडिया में, चाहे वो ईस्टर्न कर्नाटका हो, ईस्टर्न महाराष्ट्र हो, तेलंगाना, विदर्भा, रायलसीमा regions where we experience very less amount of rainfall. In those regions millets are most dominantly grown. Hence option 2 is also right. Hence jowar, bajra and ragi, they are the millets. Hence all of these options which are present, they are absolutely true. So आप ये देख सकते हैं like millets के बारे में, they are also known as coarse grains. They are a group of highly variable small seeded grass widely grown around the world. The most widely grown millet is pearl millet, finger millet, proso millet and foxtail millet are the most important crop species. Temperatures which are required for growth of millets, they are high to moderate temperature is required for growth of like these particular areas. Like it requires low rainfall, it requires a sandy soil and can be grown even where it is less fertile. India का अगर मिलेट्स देखें तो पर्ल मिलेट, बाजरा, क्लियर, वरगो मिलेट, इन दिस वे फिंगर मिलेट, रागी जो भी बोलते हैं, सोरगम एंड ज्वार, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप्स which are grown in particular Indian region where we experience very low rainfall and high temperatures. Your 30-second time starts now.
क्लियर. क्रॉप एक्स रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, मॉडरेट भी नहीं, लाइट रेनफॉल, several frost free days and bright sunshine for its growth. It grows best on black soil, alluvial soil. तो जूट तो ब्लैक सॉइल में ग्रो होगा नहीं, कॉफी भी ग्रो होगा नहीं, मेज एंड कॉटन. क्लियर. सो इट रिक्वायर्स वेरी लाइट रेनफॉल बता रहे हैं. क्लियर. हेंस कॉटन बिकम्स द परफेक्ट आंसर. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप विच इज ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल रीजन. क्लियर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप दैट इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल रीजन, दैट इज कॉटन. दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस. कॉटन का अगर कंडीशन सब देखें, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, डू रिमेंबर दिस पॉइंट, लाइट रेनफॉल, मॉडरेट भी नहीं, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, लाइक जहां पे भी मिलेगा उस रीजन पे कॉटन ग्रो हो सकता है. लाइक ब्राइट सनशाइन इज रिक्वायर्ड, सो नियरली टुवर्ड्स द ट्रॉपिकल रीजन्स इट वुड बी ग्रोन. इट ग्रोस बेस्ट ऑन ब्लैक एंड alluvial soils, this is absolutely known. China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producers of cotton. Clear. So India, Pakistan, China का नाम भी यहाँ पे है, and Brazil, USA from the South American and North American nations and Egypt from the African nations. उससे अलावा उसका ऊपर जो भी है like European nations, Russia हो, वहाँ पे ये grow नहीं हो पाएगा. It is one of the main raw materials for cotton textile industries. Like India में cotton growing belt एक है, that is Maharashtra, Gujarat, northern Karnataka, northern Telangana and some regions of Malwa Plateau Basin. Clear. So in these regions cotton is grown perfectly. Like ये black soil belt है, वहाँ पे ज़्यादा cotton grow होगा, and that is the reason why most of the cotton textile industries जो भी है they have been established in this belt. But अभी जो भी cotton textile industries है they are shifting towards the southern portions of India, towards the down south. Hence this cotton which is present, that is absolutely grown towards this western central margins of India. ये बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे आने का बहुत चांसेस है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री विच गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्लियर. सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो भी है दैट प्लेस ए क्रूशियल रोल. हेंस दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में अगर कुछ भी गवर्नमेंट कहे, नहीं तो कुछ नया पॉलिसी लाए इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली ये न्यूज पे रहेगा. तो तब आप उसका जोग्राफिकल लोकेशंस, फैक्टर्स लोकेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री देख लीजिए, एंड रीसेंट ट्रेंड्स भी चेक कर लीजिए. प्लीज डू चेक द रीसेंट trends as well in this particular cotton textile industries. Clear. Done. Next 10 question. Your time starts now. सो हर एक क्रॉप के बारे में बता चुका हूं. मेज इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स. Last 5 seconds. Clear. Consider the following statements about the maize crop. It can be grown on inferior soils. Yes, this is true. It is sown all over India except eastern and northeastern regions. Clear. तो ये regions पे तो maize grow होगा नहीं. Yield level of maize is higher than that of other coarse cereals जो भी हैं. तो ये तीनों statements जो भी दिया है, these 3 statements are perfectly true. Perfectly true. So इसका तो आंसर बाहर आ गया. जूट रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, इसमें तो ऑल ऑफ द अबव दे रखा है. लाइक alluvial soil, it is true. That is the reason why jute is most bestly thrived near to that of West Bengal region, जहाँ पे फ्लड प्लेन्स का डिपोजिशन हो, जहाँ पे लाइक द खादर बेल्ट हम जो भी बोलते हैं, लाइक खादर बेल्ट, बांगर बेल्ट, आपको सबको पता है. लाइक इंडिया का जो भी ग्रेट प्लेन्स है उसको हम 4 बेल्ट में डिवाइड करेंगे. एक हो गया बाबर बेल्ट जिसमें ज़्यादा बोल्डर्स मिलेंगे,
लाइक वी वोंट बी एबल टू डू एग्रीकल्चर इन दैट रीजन। दूसरा बेल्ट हो गया तेराई बेल्ट, तीसरा बेल्ट हो गया भांगर बेल्ट, फोर्थ बेल्ट जो भी है ये कादर बेल्ट। कादर बेल्ट का मतलब ये होता है लाइक विच इज न्यू अलुवियल रेंज। सो न्यू अलुवियल सॉइल जो भी डिपोजिशन होगा उसको हम खादर बेल्ट बोलते हैं, वहां पे ज्यादा ये जूट ग्रो होगा। क्लियर? तो अलुवियल सॉइल तो रिक्वायर्ड है ही, हाई टेम्परेचर ऑब्वियसली ट्रॉपिकल लोकेशंस में ग्रो होगा, एंड हैवी रेनफॉल। सो वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा चाहिए। सो हेंस वेस्ट बंगाल, ये जो भी लोकेशंस हैं, द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ इंडिया वुड बी हैविंग द ग्रोथ ऑफ जूट। West Bengal is leading producer, and along with West Bengal it is also Bangladesh which is also leading producer of jute. तो पाकिस्तान रीजन में भी है, बट नो नीड टू रिकवर अबाउट द पाकिस्तान एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स। बट जूट के बारे में अगर आप देखें, इट इज एन इंडस्ट्रियल फाइबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स, रोप्स, कवर्स एंड linoleum. It is used for packing many agriculture commodities. Jute is called as brown paper of wholesale trade, and jute fiber has softness, strength and length. That is the reason why इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है आजकल। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस आप अगर देखें, टेम्परेचर ऑलरेडी हाई चाहिए, मैं बता चुका हूं। इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर हाई टेम्परेचर देन लाइक 27 डिग्री थ्रू आउट द ईयर। तो ऑब्वियसली नियर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन रीजन में रहनी चाहिए। तो रेनफॉल, जूट रिक्वायर्स वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल more than 150 centimeters. Soil, it is grown on floodplains and deltas. Fertilizers are also used. Clean water, jute needs an ample supply of clean water for washing. जो भी जूट कल्टीवेशन होगा उसका फाइबर को वॉश करने के लिए क्लीन वाटर की जरूरत होती है। दैट इज द रीजन वाई मोस्टली बैंक्स ऑफ द रिवर्स जो भी होंगे, वो बैंक्स ऑफ द रिवर्स पे ये जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने तो जूट क्रॉपिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस बना है आजकल। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, done. So there is always significant fluctuation in the area under jute cultivation. So just give me one. Done. So there is always significant fluctuation in the area under jute cultivation and its production in India. This can also be attributed to. So he is asking a question like jute production जो भी है, the jute cultivation and its production, it has significant fluctuation. What is the reason behind it? Fluctuation in average rainfall during the sowing seasons. Obviously इंडिया का जो भी मैक्सिमम एग्रीकल्चर है दैट इज रेनफेड एग्रीकल्चर, ये सबको पता है। दैट पर्टिकुलर मॉनसूनल फेज जो भी है, इट हैज इट्स अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन। सो ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन ऑफ एवरेज रेनफॉल बिकम्स द परफेक्ट आंसर। Average price of jute and competing crops released in the last season, this is also true, hence C becomes the perfect option. The year to year fluctuations arise out of three factors: fluctuation in rainfall during the sowing season, the average raw jute prices released during the previous jute season, and the returns realized from the competing crops during the previous seasons. Clear? So these three are the factors why we have the price fluctuations of this particular jute, especially in India के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट।
Last 10 seconds. Clear? So which of the following fibers are not natural? तो इतना तो पता है, लाइक लेनिन इज नेचुरल, जो भी लेनिन शर्ट्स हम पहनते हैं विच हैज अ गुड रिच नेचुरल लुक, दैट इज मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड इन यूरोपियन रीजन. जो भी मैनचेस्टर रीजन है, दैट पर्टिकुलर मैनचेस्टर रीजन हैज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस लेनिन कॉटन. एंड ये जो बाकी है 1 and 3 रेयन एंड एक्रिलिक, दे आर नॉट नेचुरल. इट इज ओनली लेनिन विच इज नेचुरल. अगर फाइबर्स में आप अगर देखें नेचुरल एंड मैनमेड, नेचुरल में आप अगर देख सकते हो लाइक कॉटन, लेनिन, कपोक, जूट, हेम्प, सिल्क, ऊल, एस्बेस्टॉस. क्लियर? सो दीज आर नेचुरल फाइबर्स विच वी गेट. मैनमेड अगर आप देखें लाइक पॉलिस्टर, नाइलॉन, acrylic, nylon, rayon, so all these which are present, these are man-made fibers. Clear? तो natural and man-made fibers के बीच में difference 100% आप याद रखना है. अगर जूट पे कुछ भी असर पड़ा, आजकल क्या हो रहा है, लाइक जो भी ए नेचुरल फाइबर है, गोल्डन फाइबर है, जूट पे अगर आपको असर लग रहा है, कुछ भी अगर समथिंग डिस्टर्बेंस इज हैपनिंग, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस man-made fibers. Clear? तो man-made fibers are मेकिंग द जूट प्रोडक्शन एंड जूट फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस जो भी है, ये मैनमेड फाइबर्स पे भी डिपेंडेंट है. ठीक है? सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है लाइक एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच आर मेकिंग द जूट टू रिड्यूस इट्स इंपॉर्टेंस इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट. और रिवर्स में पूछ सकता है लाइक एक्सप्लेन व्हाट इज मेकिंग द जूट क्रॉप टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द प्रेजेंट सिनेरियो. ये थोड़ा सा आसान सवाल है, बट इसमें गलती ना करें आप, ये आपको आराम से आ जाएगा. नो इश्यूज विथ इट. Last 5 seconds. Done. So which of the following crops can be grown in Ganga basin? Maize, wheat, sugarcane, millets. Sugarcane leading producer of Uttar Pradesh. Wheat obviously grow होगा. Maize तो already बता चुका हूँ. Like eastern and north eastern regions को छोड़ के बाकी regions में grow होगा. Millets भी grow होंगे like in the Gangetic basin, and grams भी grow होंगे. All of the above becomes the perfect option for this particular question. Clear? So आप अगर यहाँ पे देखें the main crop. Clear? So the main crop is paddy since it requires sufficient water. ये तो ज्यादा नहीं grow होगा, but wheat, maize, sorghum, gram and millets and other crops that are grown. Cash crops like sugarcane and jute are also grown. Banana plantations are seen in some of the areas of the plain. In West Bengal and Assam, tea is grown in plantations. Clear? So Ganga, which it has created the Gangetic plains, in those regions rice से अलावा बाकी जो भी है major natural crops 100% they are grown in this particular Ganga basin. Clear? So next question, 15th. Clear? So there is a mismatch between the agroclimatic conditions and the cropping pattern in the country. Clear? So what are agroclimatic regions? ये पढ़ना भी जरूरत है, उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं बना आज तक, तो क्वेश्चन नहीं पूछे, बट चांसेस आर देयर एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे. सो देयर इज अ ह्यूज मिसमैच बिटवीन एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द क्रॉपिंग पैटर्न्स ऑफ इंडिया, लाइक इन द कंट्री. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग पैटर्न्स शो द सेम?
So sugarcane, cotton and groundnut. Clear? All of these which are given, they show the mismatch between agroclimatic conditions. Cotton is grown more in Maharashtra. The yield in Maharashtra is lower as compared to Kathiawar region of Gujarat. Groundnut croplands in Gujarat have lower productivity than that of in Andhra Pradesh. Sugarcane is grown more in Bihar, UP, but better agroclimatic conditions are present in Maharashtra and Tamil Nadu. Clear? So hence जो भी sugarcane production आजकल शिफ्ट हो रहा है, नहीं तो हम ऐसा कह सकते हैं लाइक शुगर मिल्स जो भी है दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स साउथ इंडिया, बिकॉज साउथ इंडिया रीजन जो भी है वहां पे द शुगर केन विच इज ग्रोन इट हैज मोर सुक्रोज कंटेंट एज बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी लेवल्स विच आर वेरी हाई, तो वहां पे सुक्रोज कंटेंट ज्यादा मिलेगा, तो शुगर प्रोडक्शन के लिए बहुत यूज होगा सदर्न रीजन का जो भी शुगर केन ग्रोइंग रीजन है. हेंस एज ऑफ नाउ शुगर मिल्स जो भी है they are trying to shift towards the South India. So this is the recent trend. इस पे ऑलरेडी एक छोटा सा क्वेश्चन आ चुका है, बट और ज्यादा क्वेश्चन लाइक इंटरलिंक्ड क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस भी मिलेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट 16th क्वेश्चन. ये तो आराम से एलिमिनेट कर दीजिए. तो आप अगर एक को एलिमिनेट कर दिया बाकी खत्म. सो ये भी लॉजिकल अप्रोच से सॉल्व हो सकता है. Clear? So which of the following crops requires high temperature and high humidity of rainfall to grow? थोड़ा बहुत बिना देखे इसको कैंसिल कर दीजिए. ऑलरेडी बता चुका हूं लाइक हाई रेनफॉल मिलेट्स आर नॉट दोज रीजन्स वेयर मिलेट्स वुड बी ग्रोन. तो 2 ऑप्शन जिसमें भी है उसको काट दीजिए. तो जो बच गया ऑप्शन 1 and 4 becomes the answer for this question. तो ये लॉजिकल अप्रोच ऑलरेडी बता चुका हूं. ऐसा 10 क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, नहीं तो साइंस हो, एनवायरमेंट हो. आपको ऐसा 10 क्वेश्चन तो कम से कम मिलेंगे, 15 भी हो सकता है. तो एक ऑप्शन अगर आप चूज कर लिए तो उसमें से आप आंसर को निकाल सकते हैं. एंड राइस एंड शुगर केन दे रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई रेनफॉल. दीज आर द ग्रोइंग कंडीशंस फॉर राइस. क्लियर? आप अगर देखें टी रिक्वायर्स moist free climate with even rainfall throughout the year. Millet is a semi-arid area crop and thus can be grown in dry conditions as well. Next 17th. तो इसमें एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो. आपको लाइक लॉजिकल अप्रोच से लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल ऑप्शन में रहना ही नहीं चाहिए, तो यू कैन सी सच काइंड ऑफ ऑप्शन हियर. Clear? So now we will discuss it. Like the yield of bajra has grown in Gujarat and Haryana in the recent years. This is due to. आप जब भी 3 ऑप्शन पढ़े हो, बाकी का तो पता नहीं, बट थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत लग रहा है. लाइक डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज इंट्रोड्यूस करने से लाइक गुजरात एंड हरियाणा में वाइट वुड बी हैविंग एन इंक्रीज. क्लियर? तो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन. तो इसके हिसाब से तीन जितने भी है उसको एलिमिनेट कर दीजिए. 1 and 2 becomes the option. ये 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है. एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रॉट लाइक रेसिस्टेंट वेराइटी जो भी है, बिकॉज ऑफ दिस गुजरात एंड हरियाणा रीजन्स में वी वुड बी ग्रोइंग बाजरा. बट नाउ दिस टेक्निक हैज ऑल्सो बीन लाइक इंट्रोड्यूस्ड इन द राजस्थान रीजन. सो इफ आई से राजस्थान रीजन में थोड़ा बहुत अगर इरिगेशनल फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करें तो 100% वहां पे व्हीट एंड बाजरा ग्रो हो सकता है. ठीक है? तो बाजरा is cultivated in hot and dry climatic conditions in northwestern and western parts of the country. It occupies about 5.2% of the total cropped area. Being a rain-fed crop, the yield level of this crop fluctuates from year to year. Clear? Once go and read this particular thing. Next question.
Clear? Consider the following statements about some of the cash crops in India. India lost both cotton and jute growing areas to Pakistan after partition. ये बिल्कुल सही है. पाकिस्तान रीजन जो भी इंडस वैली बेसिन्स है, तो they are the most important cotton and jute growing regions. Hence, this is true. All cash crops in India are grown only in rain-fed conditions. This is false. No cash crop is grown in tropical areas in the country. This is also false. Only one becomes the perfect option. तो इंडिया का जो भी पार्टीशन हुआ था, ड्यूरिंग द पार्टीशन मैक्सिमम पोर्शन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को चले गए. क्लियर? सो लाइक इन द ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान, दैट वेस्ट पाकिस्तान रीजन इज नोन फॉर कॉटन. ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश जो भी आजकल है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जूट ग्रोइंग रीजन. ठीक है. नेक्स्ट 19th, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो दिस इज इजीली डन. तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड विद इट. सो बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. तो ऑलरेडी डिस्कस किया था इसको. दिस क्रॉप रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल. मॉडरेट रेनफॉल, तो मॉडरेट रेनफॉल देख सकते हो कौन सा, लाइक वी वुड विच क्रॉप हैज दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक. एंड ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन्स एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट. तो वीट बिकम्स द ऑप्शन. It thrives best in well-drained loamy soil. तो well-drained अगर नहीं है तो wheat can't grow. In India it is grown in winter. Absolutely true. Hence wheat becomes the perfect choice of option. तो wheat के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए. Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. It thrives best in well-drained loamy soil. तो वीट ग्रोइंग रीजन्स ऑलरेडी बता चुका हूं, लाइक जो भी टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन्स हो, टेम्परेट रीजन्स हो, दे आर द मोस्ट डोमिनेटेड रीजन्स वेयर वीट कैन बी ग्रोन. तो हेंस वीट बिकम्स द परफेक्ट क्लियर staple food for the temperate regions which we have. Clear? Last 10 seconds. Clear? Consider the following statements about tea and coffee crops in India. Tea is indigenous crop of India. It's absolutely false. India grows inferior quality of coffee. This is also false because ये जो भी टी है लाइक चाइना रीजन से थोड़ा बहुत ले लिया गया था. एंड व्हेन ब्रिटिशर्स हैव एंटर्ड इंडियन देन दिस टी वाज स्टार्टेड, बट इट वाज अज्यूम्ड लाइक हिस्ट्री में ये टी तो बिल्कुल पहले से ही पता है. केरला प्रोड्यूसेस मोर कॉफी देन ऑल अदर स्टेट्स कंबाइंड. दिस इज आल्सो फॉल्स. हेंस नन ऑफ दिस बिकम्स द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. तो टी इज एन इंडिजिनियस क्रॉप ऑफ हिल्स इन नॉर्थन चाइना. There are 3 varieties of coffee: Arabica, Robusta and Liberica. India mostly grows superior quality coffee called as Arabica. Karnataka alone accounts for more than 2/3 of the total coffee production of the country. Clear? So this is up for the day, the last question. Hence, if you have liked this lecture, please give a like symbol and please do subscribe to Unacademy Studios Race, which is the largest channel for UPSC CSE preparation 2020. अगर आपको सिविल्स क्रैक करना है तो आप स्टूडियोस रेस along with प्लस प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए. सो डोंट फॉरगेट, while you subscribe to Unacademy Plus platform, please use the code called as Vijay Live. तो अब ये कोड जब विजय लाइव कोड यूज करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा वहां पे. तो चाहे वो आप 1 ईयर का ले रहे हो या 2 इयर्स का कोर्स ले रहे हो, तो you will be getting like discount of 10% by using this code. Clear? So please try to get on to this platform. 100% आपका like have a blind belief on this plus platform and studios rise. आपका 100% सिविल्स क्रैक करने का ड्रीम जो भी है ये रियलिटी में आ जाएगा. ठीक है? एंड ये वीडियो जो भी है, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है एंड वो डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म है. प्लीज डू फिल दैट फीडबैक फॉर्म so that we can come better and better for you. Don't miss. Please do fill that feedback form. Don't miss this. Clear? So hence, thank you for watching this lesson. Have an awesome day. Jai Hind.